Hello everyone, welcome to my channel Everything with Wells and welcome to another video. So today we're going to start and we're going to discuss a phrase or that is very commonly used in our English, and it is close enough with another so that which is used without any word in between both, and that so that is used to talk about or to tell the purpose of something, while this so that is different from that so that. So let's discuss what exactly this so that means and what where we use this so that. All right, so this so that is used uh, to emphasize on some fact and its result and tell its results accordingly. To emphasize on some fact and tell its result accordingly. Okay. So we use it to emphasize on some fact and tell its result accordingly. What exactly happens? This so that is basically used to tell the fact about someone or about something, and then according to that fact we tell the result. I mean, the result depends on the fact, that what exactly the fact is. And the Urdu identification of this so that is itna dash ke dash. For example, if I say वो इतना ज़हीन है कि वो इतना ज़हीन है कि कोई भी एग्जाम्स दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन पास एनी एग्जाम्स. तुम इतने ज़हीन हो कि कोई भी एग्जाम्स पास कर सकते हो. नंबर 2 देखें, दिस बुक इज सो इजी दैट इवन अ चाइल्ड कैन रीड. ये किताब इतनी आसान है कि एक बच्चा भी इसको पढ़ सकता है. शी इज सो क्लेवर दैट नो वन कैन चीट हर. वो इतनी ज्यादा होशियार है कि उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता. अगर आप गौर से देखें, यू आर सो इंटेलिजेंट, तो हमने पहले फैक्ट पे एम्फसाइज किया है. ये एक फैक्ट है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. दिस इज अ फैक्ट दैट शी इज सो इंटेलिजेंट. अब इस फैक्ट के नतीजे जो हम रिजल्ट बता रहे हैं वो ये है कि दैट यू कैन पास एनी एग्जाम्स. और रिजल्ट ये आ रहा है कि इस फैक्ट के नतीजे कि वो कोई भी एग्जाम जो है उसको पास कर सकता है. ठीक है. यू अब दूसरा देखें, दिस बुक इज सो इजी. दिस बुक इज सो इजी, इसका मतलब ये फैक्ट है. ये एक फैक्ट है कि ये किताब बहुत आसान है. दिस बुक इज सो इजी, इस पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं, इस फैक्ट पे हम जोर दे रहे हैं कि दिस बुक इज सो इजी. हमने इस फैक्ट पे जोर दिया. फैक्ट क्या है? इजी. इसके नतीजे रिजल्ट क्या निकला? दैट इवन अ चाइल्ड कैन रीड इट, के इसको एक बच्चा भी पढ़ सकता है. ये बुक इतनी आसान है कि इसे एक बच्चा भी पढ़ सकता है. नंबर 3 देखें, शी इज सो क्लेवर. नाउ हम किस फैक्ट पे एम्फसाइज कर रहे हैं? क्लेवर पे. फैक्ट क्या है? कि वो क्लेवर है और हम उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं. और उसके नतीजा क्या निकल रहा है? दैट नो वन कैन चीट हर. यानी फैक्ट ये है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है और उसका रिजल्ट ये आ रहा है, होशियार होने का रिजल्ट ये आ रहा है कि उसको कोई चीट नहीं कर सकता. एंड नंबर 4 इज दिस हाउस इज सो एक्सपेंसिव. तो फैक्ट कौन सा है जिसपे हमने एम्फसाइज किया? एक्सपेंसिव. कि ये घर इतना एक्सपेंसिव है कि दैट यू कांट बाय इट, कि तुम इसे खरीद नहीं सकते. सो ये वाला सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सो दैट जिसको हम ताके के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, आप मेरी पिछली वीडियोस में शायद देख सकते हैं. आई एम हेयर सो दैट आई कैन टेल यू द ट्रूथ. मैं यहाँ हूं ताकि आपको सच बता सकूं. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें. तो वो था ताकि उस सो दैट के बीच में कोई वर्ड नहीं आता था या कोई सेंटेंस नहीं आता था. यहाँ पे देखें, सो के बाद एक एडजेक्टिव आता है. देखें, यू आर सो इंटेलिजेंट और उसके बाद दैट आता है. यानी यहाँ सो और दैट के बीच में कोई एडजेक्टिव, ज्यादातर एडजेक्टिव आएगा. कभी नाउन आ जाए लेकिन ज्यादातर एडजेक्टिव ही आएगा. देखें, चारों एग्जांपल्स में सो के बाद एक एडजेक्टिव आया. तो अगर हम इसको यहाँ
इस सो और दैट के बीच में डॉट डॉट की जगह एडजेक्टिव लगा दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सो ये ज्यादा बेहतर होगा समझने और समझाने के लिए आपको। ठीक है। So this was very common phrase or a very common use of this so adjective that which we have not learned before, and I'm sure that you're going to use this in your sentences, and this will beautify your English. This will bring some charm, some attraction in your English, and you'll be able to understand these kind of sentences if someone else uses. And if you happen to use this, you'll just be speaking, some, or you'll be attracting or you'll be impressing the listeners with these kind of phrases. So इसके बाद हम आपके आपसे कुछ sentences पूछते हैं and then you have to complete those sentences. Okay, complete the sentence using so that. ये sentence है Ali is so dash that. तब आपने अली के बाद so के बाद एक adjective लगाना है and then you have to use that and then you have to complete the sentence. All right. So complete the sentence, drop your message in the comment section, and I'll see the sentences who made correct, who made mistake, and then I'll give you my remarks on that. Till then, take the very best care of yourself, and I hope you like this video. And if you're new on my channel, please subscribe to my channel and like this video, and if possible, please share my video with your friends, with your colleague, with kids especially, because they can understand, they can improve their English through my videos, and the housewife, those who cannot go to the institutions, coaching centers, they can learn, they can improve their English through my videos. So till the next video, probably tomorrow or maybe on Monday, take the very best care of yourself. Bye bye.